और नंदिनी कैसे आना हुआ? So we were on differentiation. More questions. Differentiation of function parametric form. See, x and y both are variables. X is called independent variable, y is dependent variable. Sometimes even these two variables are in the form of parameters. Like you've been given x is equal to 80 square and y is equal to 280. So t over here would be a parameter. T is a variable. Devika, Anushka, camera on. A is a constant, some real number. And the question would be that find dy by dx. So since x and y both are variable, t is also variable. And you see, if I remove t, if I replace t, it'll become a Cartesian equation. For example, if I replace t from here, t is y divided by 2a. If this t I substitute over here, then this will be x is equal to at square. T is y by 2a whole square. So this would be Cartesian equation of the parabola. So y square is equal to 4x is Cartesian equation of parabola. Whereas x is equal to 80 square, y equal to 280 is a parametric equation of the parabola. So t is a parameter here. The best part is only one parameter is good enough to find x and y both. So dy by dx would be dy by dt. You differentiate y with respect to t, divide by dx by dt. So whenever you want to find derivative of function in parametric form, this is what we're going to use. It may be possible sometimes you've been given a parameter other than x, t also, like x equal to a theta minus sine theta and y is equal to a theta cos theta. This time theta is a parameter. So in case you want to find out dy by dx, all you do is find dy by d theta divided by dx by d theta. So this is when you differentiate a function in parametric form. Anushka, you missing a lot of classes? यस सर, क्योंकि स्कूल के भी जो ट्यूशन टेस्ट वगैरह है वो भी क्लैश हो नहीं रहे नहीं, वो तो चलते रहेंगे. क्लास मिस मत करो. ये तो 12th का है, एज इट इज. दिस इज हैं. 12th यस. part which will help you. If you miss 12th part, then that means you're not doing justice with your 12th studies as well. Whatever I'm doing here, they'll be there in the boards as well. जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बोर्ड में आएंगे पक्का. इसलिए सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ, बोर्ड वाले. इसको तो समझ में आ गया है. अद्विका को तो आर ने आज शुरू कर दिया इसने. कुछ नहीं, कुछ नहीं, सुनो मत ना तुम. सो if you want to find dy by dt, what is dy by dt? T is a parameter. You're differentiating y with respect to t, right? And divide by dx by dt, what is x? X is 80 square. So dy by dx will be 2a, because derivative of t with respect to t would be 1, and this would be 2t. Derivative of t square with respect to t would be 2t. So the answer would be dy by dx is equal to a, say a cancels 1 by t. So dy by dx is 1 by t. Now do one thing, tell me what is dy by dx in the second part of the question. Fast. Find dy by d theta over here.
You find dy by d theta, you find dx by theta, divide the two. क्या हो तुम नोटबुक भूल गई आज फिर? हमारे दोस्तों लोग कहाँ चले गए आज सब? हम्म। वो घर से भी नहीं करती क्लास? So dy by d theta would be, you need to basically apply product rule over here. A is a constant, a theta cos theta, divided by dx by d theta, which is x is a into theta minus sin theta, right? A is a constant, you can take it out, and here you can apply product rule. Derivative theta is 1, cos as it is, theta as it is, derivative of cos is minus sin theta. Divide. Hmm? And this would be 1 minus cos theta. A and A cancels. So that's your answer. Cos theta minus theta sin theta over 1 minus cos theta. पहले question में, like here we have dy by dx is equal to 1 by t. My question to you is, can you tell me what will be d2y by dx square and what will be d2x by dy square? In this question, if x is 80 square, y is 280, find d2y by dx square and d2x by dy square. Try this question. If x is 80 square, y is 280, find. रागिनी कैमरा ऑन करो. बिल्कुल सही पकड़े हैं. पढ़ रही हो तुम आजकल लग रहा है. अच्छा जल्दी से करो फिर. हम्म. हम्म. गुड. सर्फ एक्सेल यूज करो. x equal to 80 square, y is equal to 280, find d2y by dx square and d2x by dy square. हाँ. अब पहले ये समझ लो कि what is d2y by dx square. d2y by dx square is nothing but second derivative of dy by dx with respect to x. So if you differentiate dy by dx again with respect to x, it will be the second derivative. So d2y by dx square is d by dx of dy by dx again. So this is d by dx, and this is, what is dy by dx? You've already found 1 by t. This is 1 by t. So this is t to the power minus 1. Is it fine, Emma? All right. Now the problem is you're differentiating t to the power minus 1 with respect to x. So you need to apply chain rule, okay? You need to apply chain rule. T raised to power minus 1 would be minus 1 t raised to power minus 2 into dt by dx. You need to apply chain rule. वैसे करो एक ही बात है. So this would be 1 over t square with negative sign. And what is dx by dt? dx by dt कितना था? 280. So dx by dt was, it is basically dx by 1 over dx by dt. So minus 1 by 280 cube is the answer. So this is the answer, minus 1 by 280 cube. Hmm? हाँ तब भी वही आंसर आएगा. But final answer should be in terms of t.
क्योंकि पैरामीटर दे रखा है ना. You are differentiating t with respect to x. That is why. Otherwise, see, the second method could be just for understanding. Yet this is t, so I'll make it t also. What I do is I multiply by dt in the numerator and denominator, and I shift dx this side. The same thing. So derivative of this would be minus 1 by t square, and this is 1 over dx by dt, which is 280. Answer will be the same. So this is second derivative. Now what is d2x by dy square? Now, the first mistake would be that you'll write d2y by dx square as 1 over d2x by dy square, which is not correct. Remember this. Okay? dy by dx is basically 1 over dx by dy, no doubt about it. But in the second derivative, you can't do this. Just, अच्छा ऐसा करो, find d2x. Tell me. Everyone find d2x by dy square and tell me the final answer. Answer would be in terms of a and t. 1 Let's upon see. हाँ, 1 upon 2a. 1 by 2a. Let's see. Decide कर लो. Yes, no, yes. d2x by dy square का मतलब हुआ d by dy of dx by dy. That is the meaning of d2x by dy square. We are differentiating dx by dy with respect to y. So this is d divided by dy. What is dx by this is basically 1 over dy by dx, right? It is 1 over dy by dx. What was d by dx? 1 by t. So it'll be this. So this would be dt by dx. You know this. It is 1 by dx by dt. Hmm? Sorry, y. So this is 1 over dy by dt. हाँ. So substitute करो. But this is not x. This is y now. So what is dy by dt? 1 by 2 है ना? So it is 1 by 2a. Now, more questions from the assignment. They have the assignment now. Now we can answer mixed questions. Page number 6 have some important questions, which could be an entrance as well as board also. Question 2, page number 6. Question 2, 3, 5 is ultra important. Entrance में भी आता है. Let's answer these questions. Page 6. अभी आज सरप्राइज टेस्ट है तुम्हारा. आज सरप्राइज टेस्ट है तुम्हारा. कहाँ जाना है?
अभी टेस्ट नहीं होगी। पेज 6। हम्म पेज 6 में यू हैव like two, not Roman. I'll write the question. Let me write the question. If sine y is equal to x sine a plus y, prove that dy by dx would be sine square a plus y over sine a. Now, this could be in the form of MCQ also. So, it's equally important for board also and entrance. In a way, this is your answer, hai na? This is your answer. Keep an eye on this. On the right side, there's no x. A is a constant, yes. Find dy by dx, and that dy by dx should not contain any x. So if we keep an eye on the right side में there is no x. इनवर्स नहीं, डिफरेंशिएट करना है, बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा, कर लो जल्दी से। ये तुमने किया होगा, इफ यू हैव रियली सीरियसली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम यू मस्ट हैव डन दिस। अब कर लो, मुझे मालूम है ना। मैंने अनन्या सबको भी बताएगी बोर्ड पे कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब एक्स को हटा दो ना, इस एक्स को हटाओ, एक्स को ओरिजिनल ओरिजिनली दिखाओ। एक्स कहाँ गया? तुमने क्वेश्चन भी तो नहीं लिखती, प्रॉब्लम तुम्हारी है। अब तुम जब रिवाइज करोगे कैसे पता लगेगा क्या था, कौन सा क्वेश्चन था? एक्स की वैल्यू है साइन वाई ओवर साइन ए प्लस वाई, रिप्लेस दैट। ये सही किया डेरिवेटिव? ठीक है, प्लस है। अरे प्लस कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ये, चेन रूल। करो अब दोबारा से उसको। सर हम ए कांस्टेंट ही लेंगे ना? हाँ, ए कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। कीप एन आई ऑन द राइट साइड में देयर इज नो एक्स। Emma, you must have done it earlier also. See, one method is to differentiate directly. Use the product rule. X को रिप्लेस करो एंड में। हाँ, राइट। X would be sin y by sin this, है ना? खा रहे तुम्हें? ठीक है। जनरली यू हैव फीवर। अभी ठीक है, अच्छी बात है, गुड। हम्म हाँ, अब सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो। एक्स को रिप्लेस किया, यहाँ भी तो dy by dx आएगा देयर। व्हेन यू डिफरेंशिएट a plus y अगेन तो dy by dx into dy by dx। हो गया? हाँ, इसमें तुम्हारी आइडेंटिटी लग जाएगी ना। Now see, I would do by a different method because I know that since there's no x on the right side, I'll do it like this. I'll write this as sine y divided by sine a plus y equals to x. इससे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। If you do it directly like this, there is no need of substitution. This is a shortcut method. Since there is no x on the right side or left side, x को separate कर लो, ठीक है? Now differentiate this, differentiating with respect to x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दृष्टि शॉर्टकट मेथड देख लो। राइट साइड में एक्स लिखो, आंसर में देयर नो एक्स, एक्स को आइसोलेट कर दो। नाउ डिफरेंशिएट इट। लेफ्ट साइड यू अप्लाई क्वेश्चन रूल, sin a plus y as it is, derivative of sin y which would be
cos y dy by dx. Then minus sign, numerator as it is, derivative of denominator, which is sine a plus y. The derivative would be this into dy by dx. Right side would be 1, and you get your answer. So that is short method. So this is dy by dx. This becomes identity, sine a plus y into cos y minus sine y cos a plus y is equal to, so this gives you answer straightforward. There's no need of substitution. This is identity of sine a minus b. So yes. हाँ, एक्स को रिप्लेस करो ना यहाँ से, एक्स इज साइन वाई बाय दिस, बट इज अ लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट मेथड से कर लो. एक्स को आइसोलेट करो और स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता है, उसमें दिस नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. But if you don't do it like this, if you go like this, then you need to substitute x again. So it'll be slightly longer. By chance you forget to isolate x, but you do it this way, it'll take a little longer. Sin a plus y, cos a plus y, dy by dx, derivative of x is 1. So here I apply product rule. Now bring the term of dy by dx on one side, take common, and this would be sine, this is second method, alternate method, minus x into cos a plus y. This is sine of a plus y. Now you need to replace x. X is sine y over sine a plus y. Replace it over here, take LCM, apply identity, and then slightly longer question. But since there was no x, I rearranged and different. This is a shorter method. Next करो. दिव्या कौन सा कर रही हो तुम? ओके. रागिनी कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सर मेरा तीसरा शुरू करा है अभी. ठीक है, फाइन. एंड देविका? Sir, I'm doing fifth. Third I tried. और पुराने वीडियो सारे देख लिए तुमने? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस Yes. हो गया? Yes. ओके. इसमें आएगा बिकॉज तुम एलसीएम इसको इधर लाओगे ना पहले, ये वाली टर्म इधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, डिवाइड इज कॉमन लोगी. सी, यहाँ किया है मैं, सेकेंड मेथड मैंने यहाँ किया है. यू गेट दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन. नाउ डी वाई बाई डी एक्स is equal to sin a plus y divide by this entire thing. यहाँ पे you need to replace x. What is x? x is, नहीं एक ही बार करना है, एक बार में काम हो. cos a plus y. Now you take LCM the denominator, identity बन जाएगा, y कट जाएगा. हाँ हाँ. Third question में you need to make some kind of substitution, then only you can answer this. हाँ. नहीं नहीं, दोनों में साइन. Angle would be different. In third question, you have under root 1 minus x square plus 1 minus y square is equal to a into x minus y, right? I need to show that dy by dx is under root 1 minus y square over under root 1 minus x square. So we can simplify this first by some substitution. Otherwise, you can directly, if you do directly, a will be there. And then even if you replace a, answer nahi aayega. So let x is equal to sine theta, y is equal to sine phi. That is sine inverse x is equal to theta,
Sine inverse y is equal to phi. So we'll make these two substitutions. These are typical questions which we'll answer by these methods only. Any other method would be longer, it'll take time. So when you substitute, this is 1 minus sine square theta, 1 minus sine square phi, a into sine theta minus sine phi. दिया हुआ है क्वेश्चन में. So this is cos theta plus cos phi is equal to a into sine theta minus sine phi. In the derivative, we have y and x. So that means I need to simplify it further. Apply cos c plus cos d. What is cos c plus cos d? Ananya? Cos c plus cos d. Right. Cos c plus d by 2, cos c minus d by 2. What is sin c minus sin d? This d. Sin c minus sin d. 2 cos c plus d by 2 sin. Right. So now, कुछ कट रहा है? 2 and 2 cancels. Cos and cos term cancels. I get this term on the left side. It will become cot theta minus phi by 2 is equal to a. I won't differentiate now because still theta and phi is there. So next time theta minus phi divided by 2 is equal to cot inverse a. Taking cot inverse of both the sides. Now replace theta and phi. What is theta? Theta is sine inverse x. Phi is sine inverse y is equal to 2 cot inverse a. Now differentiate and you get your answer. Differentiate and you get your answer. 2 I took other side. हाँ वो लंबा है ना, लंबा है वो. रैशनलाइज भी किया होगा ना. अच्छा सब्स्टिट्यूट ए. ठीक है. So the moment you differentiate, 0. A is a constant, so derivative of cot inverse A would be 0. A is a constant. So we get the answer. dy by dx is this, right? So dy by dx is root of 1 minus y square over 1 minus x square. अनुष्का समझ में आ रहा है? Yes. Next is 5. Fifth question is extremely important. It has been there in entrance as well as boards many a times. dy by dx लिखो, शॉर्टकट क्यों मार रही हो? Question 5. हो गया ना? उससे भी आ जाता बट थोड़ा लंबा होता उससे. मतलब you have to replace a. Question 5. You have 5 minutes to answer this. Attempt yourself. Again, look at the answer. Answer is dy by dx is minus 1 over 1 plus x square. यही है ना? That means it does not have any term of y on the right side.
So take more time for simplification than differentiating. First, simplify, write y in terms of x. Get one term on the right side, square both the sides. एक टर्म को राइट में लाओ, दोनों साइड को स्क्वायर करो. हम्म. ओपन करके लेफ्ट में. इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. हाँ, इसीलिए हम क्वेश्चन पहले बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के पहले. पर पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे, स्क्वायरिंग हाँ, करके यस एक यस कर सकते करो। थे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता. फिर एक को टाइम। रिप्लेस कर देते हो जाता. फिफ्थ. Here we need to prove dy by dx is minus 1 over 1 plus x square. X plus 1 whole square. On the right side, we don't have any term of y. फैक्टराइज कर लेती ना. हम्म. इसको इधर लाओ, दिखाओ. गेट दिस साइड. साइड हमको एक लेफ्ट में ले लो. इसको फैक्टराइज करो, a माइनस बी ए प्लस बी. इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो, वो भी फैक्टराइज. तो वो एक टर्म कट जाएगा फिर. हुआ सिंप्लीफाई. See, if you directly differentiate, you won't get answer because y will always be there. In the answer, there is no y on the right side. To try to write the function, y is equal to only x. Simplify the function, write y in terms of x. इसको implicit की से explicit बनाओ. You should get the function as y is equal to something of x. Then differentiate. Otherwise, this every time you differentiate, y आता रहेगा and there will be a problem. हाँ. So convert this function, which is implicit at the moment, into explicit function. Don't differentiate directly. Squaring both the sides. But will that give you answer? उससे आंसर आ रहा है और कुछ भी आएगा. So x square minus y square plus x square y minus xy square is equal to 0. ये आ गया. If you differentiate at this moment, you won't get answer. Y आएगा वापस से. So don't differentiate, factorize. Use a plus b and a square minus b square here. Here you take xy common. X minus y is equal to 0. अब x minus y is common. So x plus y plus xy is equal to 0. X minus y is equal to 0 or x plus y plus xy is equal to 0. If I differentiate this, I get dy by dx as 1. So I discard this because I want to prove this. That is, I need to differentiate that. But if you differentiate this directly, you won't get the answer. है ना? तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. y कॉमन ले लो. अब this function is explicit function. Now differentiate it. अब हमारा y x के टर्म में आ चुका है. It is explicit function. Now you differentiate this. Hmm.
हम्म, वो शेड्यूल मिलता है ना, मैम बताते हैं तुम्हें. So dy by dx, now you use quotient rule, minus sign take out, denominator whole square, x derivative 1 plus x as it is, x as it is, derivative of 1 plus x. And that's how you get your answer. सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, डिफरेंशिएशन में उतना ही कम लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 एंड देन 9. हम्म, हाँ 6 में भी सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नीडेड. वो तुम्हें देख के आइडिया लग रहा है. दिस क्वेश्चन वाज लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड. 6 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था. अभी देखा है तुमने? सिक्स्थ में मैं एक्स क्यूब को साइन थीटा लूं. Yes, x cube as sine theta and y cube as sine phi. X cube as sine theta, y cube as sine phi. सिंप्लीफिक सिंप्लीफाई कर लो. हम्म, उल्टा कर रही हो तुम. क्या कर रही हो ये? एक्स क्यूब में साइन स्क्वायर क्या लिया, साइन फाई लिया ना, साइन थीटा लिया. तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना, तो फिर तो कॉस थ्री थीटा कहाँ से आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नहीं आएगा. हाँ, तो दिस इज वन. तुम शॉर्टकट मारती हो ना, एक स्टेप लिखो. लिखो पूरा यहाँ पे 1 - लिखो पूरा साइन. हाँ, उल्टा ये भी गलत है. ये है एक्स क्यूब साइन थीटा, वाई क्यूब साइन फाइव. अब कर लो. हम्म, हाँ अब देखो, गिवन आइडिया क्या करना है. दिमाग में थोड़ा जोर डाला करो. यूज इट और लूज इट. दिमाग को यूज करना सीखो. हाँ, so it's very similar to the third question, no? The same as third question, only thing is they've given x cube, y cube. So in the sixth question, let x cube as sine theta, y cube as sine phi, and you end up getting the same kind of result. दृष्टि हो गया वाला. हाँ, उसको कॉर्ड को राइट में ले लो. हाँ, कॉर्ड को राइट में ले जाओ. कॉर्ड इनवर्स है, हाँ. नाउ डिफरेंशिएट. क्या कर रही हो? एक्स क्यूब बाहर लिख रही हो, साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा वो. हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे इसको ऐसे लिखोगे तो. ए लिखो यहाँ पे. अब डिफरेंशिएट करो. हो गया. हाँ, सेम थिंग. या फिर आगे तो सेम ही है। हाँ, बार हो गया. नाइन्थ इज वेरी सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन. नहीं, सेकंड क्वेश्चन. नाइन्थ सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन. वेरी सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन.
It's cos. That was sine. Cos है ना. Hmm. It'll be shorter. Differentiate directly. Since right side does not have x, differentiate directly. ये क्या किया? y by x कहाँ से आ रहा है ये वाला? हम्म. तो ये क्या है? y स्क्वायर. अच्छा अच्छा. ओ चेन रूल. हम्म. This is sine a minus b. No, we are finding dy by dx. We are differentiating with respect to dy by dx. So dy by dx of both the sides will be 1. D by dx of x, which is 1. Now, so ninth was similar. हो गया सभी का. Emma have done ninth. Divsha, Anushka done. रागिनी, कौन सा राग छेड़ा तुमने? नाइन्थ. हाँ जी सर, कर रही ठीक है, हूँ अभी। जल्दी करो. क्या हुआ? ये देख रही थी? Now, question 3, 5, 6, 7, 8 on page 8. हो गया तुम्हारा? अभी याद है डिफरेंशिएशन? इसमें से एक क्वेश्चन आया होगा. हमने अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं. याद नहीं है? अभी तुम्हारे स्कूल में एग्जाम हुआ था. अच्छा. हैं? आया था ना ये? इसको याद ही नहीं. थर्ड क्वेश्चन आया था. क्या तुम कितने मार्क्स आए मैथ्स में? तो वो फोकस हो रहा था ना. मार्क्स आ गए मैथ्स के? स्कूल एग्जाम. Question 3. Just look at the answer. In the answer, we have x by 2 plus. So first you take log and then differentiate. Log will convert product into sum. Log converts product into sum. So first you need to take log of the entire equation, then differentiate. ठीक है? अनुष्का log ले लो. log तो आता है ना? वरना लोग क्या कहेंगे तुम्हें log भी नहीं आता है. उसकी तो हंसती है ना, हर बार हंसती हो.
That's the beauty of this. Take log of both the sides, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो उसको. अरे डैश डैश लगा दो ना, तुम क्यों घबराती हो? तुम तो वैसे शॉर्टकट में माहिर हो. और हाँ, वो हो जाएगा प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट. हाँ लेके चलो, प्लस लिख दो यहाँ पे. नाउ यू डिफरेंशिएट. आफ्टर टेकिंग log of both the sides, then you differentiate. Cos of x by 2, cos of x by 4, cos of x by 8, and dash dash till sin x by x. Since in the answer we have plus sign in between, that means we need to take log of both the sides. Taking log. So it will be log cos of x by 2 plus log of cos x by 4 log of cos x by 8 and so on. The right side would be log of sin x minus log x. Log a by b is log a minus log b. Now differentiate. आएगा. So once you differentiate it, on differentiation, we need to apply chain rule. Assume this to be x for a moment, log x is 1 by x. And then derivative of this, which is minus sin x by 2, then derivative of x by 2, which is 1 by 2. This is the first term. Similarly, second term would be 1 by cos x by 4. Derivative of this would be minus sin x by 4, and derivative of x by 4 is 1 by 4. Right side would be 1 by sin x. Derivative of sin x is cos x, and derivative of x, log x, is 1 by x. So this is minus 1 by 2 tan x by 2 minus 1 by 4 tan x by 4 and so on. And this is cot x minus 1 by x. Again differentiate with respect to x and you get your answer. Differentiate once more. ये दिल मांगे more. सर Hmm. सर आपने लॉग क्यों लिया था, मतलब आपने क्या रीजन बताया था कि लॉग लेने का? Log प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है. Log converts product into sum. In the answer we have plus plus plus, right? So that's why we have taken log. Again differentiate. माइनस साइन का क्या होगा? माइनस साइन को दोनों साइड से काट दो. बट उधर तो माइनस 1 by 2 tan x का sec square x by 2 into 1 by 2 minus 1 by 4 sec square x by 4 into 1 by 4 and dash dash, and this is माइनस साइन दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन. Now you can multiply the entire equation by negative sign and it's done. Yes. माइनस से तो मल्टीप्लाई करो पूरा. जैसे किस स्टाइल है मत. अच्छा वो तो ये तो पॉजिटिव था ना पहले. और क्या, माइनस एक्स की पावर -1. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट एक्स की पावर -1 तो माइनस माइनस प्लस.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक यू कैन टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड है। क्या हुआ? से डेरिवेटिव 1/x is -1/x², so माइनस माइनस प्लस हो गया वो। So now you multiply entire equation by negative sign. So 1/2 square, 1/4 square. This is cosec square x minus 1/x², यही है ना? नेक्स्ट करो। क्या बोल रही है? शिक्षांतर में वो ये शिक्षा मिलती है उसको। शी इज डूइंग फाइन। In the fifth question, you have left hand side में x to the power y, so you take log of both the sides. Hmm. Function to the power function. Fifth question. Hmm. Take log of both the sides and then differentiate. Log e to the base e is 1. ये क्या किया? ये था ना, दिखाओ। x माइनस, हाँ, x माइनस वाई था ना, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया ना। ये क्यों लिख रही हो? ये तो 1 हो गया ना, ये तो log e to the base e। क्या बोल रही हो? Log e is 1. Log of any number to the same base is always 1. Why you want to differentiate this? Why you want to apply product rule, Murk? See, if I ask you derivative of 2x, you'll apply product rule. No, x to the power y is e to the power x minus y. Taking log of both the sides, see, this is log e to the power x minus y. So now you apply property of log. It is y log x, and this is x minus y log e to the base e, which is 1. Why do apply product rule? This is 1. Log of any number to the same base is always 1. Log of a to the base a is always 1. Now differentiate y as it is, 1 by x, log x as it is, dy by dx, right side 1 minus dy by dx. Bring all the term of dy by dx on one side. Thank you very much. And you get your answer. See, if you want, you can replace x minus y. Yeah, y minus x is also minus y log x. You can replace if answer नहीं आ रहा तो x, हाँ, हम्म, हम्म,
अच्छा, this will go, this is this side and this is okay. Now, if you want, you can replace x minus y. X minus y is y log x. आंसर में x minus y नहीं आ रहा है. No. So dy by dx is x minus y over x into 1 plus log x. Is the answer? नहीं, मैंने ना y को x के टर्म्स में लिख लिया तो ठीक 3. है. Otherwise, x minus y you can write as y log x. You can replace y. अच्छा, आंसर में y is not there ना. Then you need to replace y. आएगा x is equal to y into 1 plus log x. That is y is equal to x over 1 plus log x. So replace y as x over 1 plus log x. बस बेस्ट होता है कि हम शुरू में इसको y के टर्म में लिख लेते हैं. दैट वुड बी बेटर. ठीक है. So the best thing would be, rather than differentiating here, find y in terms of x. Shorter method would be that only. Y log x plus y is equal to x. So y would be x over 1 plus log x. This is a shortcut method. Use this. इसको ऐसे कर लो, it'll be better. Find y in terms of x only, explicit, and then differentiate. It'll be easier. So y is equal to x over 1 plus log x, and then use quotient rule to differentiate. I didn't notice कि there is no y on the right side in the proving. Y नहीं था ना, तो उसको convert into explicit function. In the beginning only write y in terms of x and then differentiate. This will not be needed. क्या हुआ? नहीं आएगा कहीं, इसलिए मिस्टेक हो रही है. इसमें बहुत पेशेंटली करना है. ये एंट्रेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन. हो गया. सेवेंथ. हाँ. लॉग से करना पड़ेगा तुम्हें. टेक लॉग, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ये करना है. अब एक बार दिखाओ मुझे राइट इसमें क्या किया. हाँ, अब इसको ओपन करो. ब्रिंग डिवाइड एक्स ऑन वन साइड एंड द अदर टर्म अदर साइड. कहीं गलती मत करना, अदरवाइज वापस करना पड़ जाएगा. पूरा ओपन कर दो इसको. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स. इस वाले में एक्स एक्स कट गया. इसका होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पे. एक्स भी कटेगा ना एंड में. दिस एंड दिस. द बेस्ट इज दिस. ये वाला मेथड कर लेना. ये शॉर्टर है. हाँ अब नहीं नहीं ये क्या किया तुमने. क्या बात कर रही हो. ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई 1 से. ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई. तो अलग अलग क्या कर रही हो तुम. ये इसको अलग लिखती ना. फिर तभी डिवाइड एक्स उधर आ जाएगा लेफ्ट में, और इसको राइट में ले लेना. हम्म. अभी मत करो अब. ये सही था. नाउ डिफरेंशिएट. ये भी जरूरत नहीं थी वैसे, बिकॉज एम ये तो कांस्टेंट है ना. यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, was there in entrance also JEE paper 2.
Take log and then differentiate. N will come out now. Prove dy by dx is y by x. हो गया ना log से? कर दो. Take log of both the sides. Now differentiate. नहीं, इसको पहले प्रॉपर्टी लगाओ. m log x n log x n log y. Then differentiate. Now take LCM this side also, that side also. Right. दोनों साइड का एलसीएम लो. दोनों साइड का एलसीएम ले लो, कट जाएगा. एलसीएम ले लो. साइन का ध्यान रखना. एम वाई. ये क्या है? दिस, ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है. ये गलत हो गया ना. ये वाई इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा. ये एम वाई एन वाई नहीं होगा. हम्म एम एक्स काटो. एम एक्स. अब सिंप्लीफाई करो. आ गया. राइट साइड शी इज ओपन इट एंड देन टर्म्स ऑफ डी बाई डी ऑन द लेफ्ट साइड. हाँ, लंबा क्वेश्चन है. नहीं, एम प्लस एन इज ए कॉन्स्टेंट. वाई दो बार क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल? एम तो कॉन्स्टेंट है. हम्म. राइट साइड में अगेन देयर इज नो प्रोडक्ट रूल. अब तुम एक बार इसका वो देखो, आंसर क्या है. आंसर से आइडिया लगता है. अच्छा 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 अच्छा. बट इन द आंसर यू हैव प्लस साइन है. प्लस 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 ना. एंड यू हैव वाई ऑल्सो इन द आंसर. दैट मीन्स ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं. इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. वेल, एलसीएम लोगे एंड देन यू टेक लॉग, बिकॉज लॉग में वाई वापस आता है ना. बिकॉज log y, डेरिवेटिव log y इज 1/y dy by dx. पता है कैसे लगा? बिकॉज इसके आंसर में यू हैव y. मतलब ये होगा dy by dx of log y on the left side. This question came in IIT Advance also. Then was J paper 2 as well, J paper 1 also. बोर्ड में तो आता ही है. In the next question, have a look at the answer. That is, what do you want to prove? Because that's IIT Advanced question. Old question, but it's a good question. For the next question, you have complete 10 minutes. Do it yourself. अगला वाला. पहले फर्स्ट टेक एलसीएम.
And now take LCM and simplify. इसका LCM ले लो, इसका भी LCM ले लो, कट जाएंगे सारे। हाँ, एल्स सीधा कैसे लॉग ले लोगे? देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन। लॉग यू कैन टेक ओनली व्हेन दे आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। तो पहले एलसीएम लो। आप पहले एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, ये बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये सारी मल्टीप्लाइड है, देयर बी ओनली वन टर्म लेफ्ट इन द न्यूमरेटर। You find y in terms of x. समझ के लिखना है सारा। कट गया ना, x प्लस वाई कट गया। उसका ओपन करो ब्रैकेट, कट जाएंगे बहुत सारे टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज अ ट्रिक टू टेक एलसीएम। डोंट टेक एलसीएम इन वन गो। व्हाट यू डू इज टेक एलसीएम इन द स्टेप बाय स्टेप। पहले लास्ट टू टर्म का एलसीएम लो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर नेक्स्ट टू टर्म का एलसीएम लो, ऐसे करो। इफ यू टेक एलसीएम स्ट्रेट फॉरवर्ड विल बी टफ। सो टेक एलसीएम स्टेप बाय स्टेप। लास्ट टू टर्म का एलसीएम ले लो पहले, उसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, तो लास्ट टर्म का एलसीएम, पहले तो एलसीएम लेना, इसका सिर्फ इसका एलसीएम लो। तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा ये। हाँ चलो ठीक है, साइन की गलती मत करना। तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं, कट जाएगा। इसकी एक टर्म कहाँ गई? एक और दो, फोर टर्म्स थी ना। हाँ तो ये दो दो ही तो कटेंगी, चार कैसे कट, एक और कैसे काट दे? तीन कैसे कट जाती हैं? और एम वाई कैसे काटा? हाँ, और एम वाई ये तो उधर से कैसे कट जाएगा? मल्टीप्लाइड थोड़ी, एम वाई माइनस एन एक्स आएगा ना। हाँ, कट गया, क्या आ रहा है एंड में? वाह गुड। अब तुम ना लॉग ले लो उसका, और नीचे, गुड मैंने बेकार में बोला, नीचे वाला खा गई तुम। आ रहा है ना? इसमें तो कट रहा था, दिस इज एम एक्स माइनस एम एन, तो आ ही नहीं सकता। नहीं, दिस इज एक्स। y is x square over x minus a, x minus b, x minus c. Then you have bx divided by x minus b, x minus c. Then you have c divided by x minus c plus 1. Take LCM of these two first. If I take LCM of these two first, it will be c plus x minus c divided by x minus c. C and c cuts. Now you take LCM of this as it is. So LCM of this is x minus b, x minus c. So this would be bx, x into x minus b. So bx and bx would cut. So if you take LCM step by step, it will be very easy. Not many calculations. Now you take LCM of these two terms. So this is x minus a, x minus b, x minus c. This is x square plus x square is also left here, x minus a. तो ये कट जाएगा अब। So finally get y is equal to x cube divided by x minus a, x minus b, x minus c. Now we take log, apply the property of log, and then differentiate.
मेरा एक एक्स्ट्रा 3 बच रहा है जो कहीं नहीं जा रहा। आएगा आएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज है, यूज दैट। नाउ टेकिंग लॉग, when I take log, it will be log y, it will be 3 log x using property, minus log x minus a, minus log x minus b, minus log x minus c. Now you can differentiate this. कर लो। Differentiation के बाद you need to rearrange the terms to get the answer. तो हम्म मैं 3 का अगर 1 1 1 सबके साथ लूंगी तो होगा, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा। आ गया सर आंसर।
Keep an eye on the answer. Then you have also x square plus 4, y square plus 4. So you can find x square plus 4, y square 4. Question 6, page 9. It's a parametric question, no? Sec theta tan theta. Theta है ना? In place of t we have theta. So you find dy by dx, that is dy by d theta over dx by d theta. And dy by d theta भी निकालना है. It's a parametric form. Sixth question. There's no need. हाँ. Question 6, page 9. X is sec theta minus tan theta. And what is y? Okay. And what is y? Second. And to prove you can say this also, no? Same thing. We have to show that dy by dx whole square is x square. Right side. Okay. This is what we are supposed to show. So can we simplify a little bit the right side? If I square both the sides, I'll get sec square theta plus cos square theta minus 2. Is it okay? No, because if I find dy by dx, my answer would be in terms of theta, not x and y. Whereas the right side in terms of x and y, so I am writing the right side in terms of theta. So sec theta cos theta cuts. If I add both the sides, 4, then this is sec square theta plus cos square theta plus 2. That means x square plus 4 is sec theta plus cos theta the whole square. Is it fine? The right side x नहीं वो भी करेंगे, that's needed because left side I need to solve left side also. I need to solve left hand side also. Both the side I need to solve. Similarly, you can find y square plus 4 also. Squaring both the sides, it will be y square is equal to sec to the power 2n theta cos to the power 2n theta minus 2. Adding 4 both the sides, sec to the power 2n theta cos to the power 2n theta plus 2, which is whole square now, which is sec to the power n theta plus cos to the power n theta whole square. So now you know the what is RHS. RHS would be n square into this by this. So now get dy by dx and square it and prove that this is equal to this. So I have simplified the RHS first. The RHS is coming out to be n square into sec n theta plus cos n theta by sec theta plus cos theta the whole square. This is the RHS. So now our job is find dy by dx and then show its square is equal to this. हाँ ये आना चाहिए, but this should be dy by dx. Then you rearrange. Right, that's right. So find dy by dx. So first you can find dy by dx.
your dy by dx would be dy by d theta over dx by d theta. I don't want tan. I want sec and cos only. Tan को open कर दो. So what is dy by d theta? Dy by d theta would be derivative of this n sec to the power n minus 1 theta, and then derivative of sec theta is sec theta tan theta. Cos to the power n would be n cos n minus 1 theta, then sin theta with negative sign. Dx by d theta would be sec theta tan theta, and it is plus sin theta. This is your dy by dx. But its square should be this. So now rearrange the terms. How would you rearrange? I don't want tan. I want sine. So what I do is I take either you replace, acha, this and this will become sec to the power n theta, na? So here you can multiply with cos and divide by cos. What you do is, in order to get rid of tan theta, what you do? Multiply by cos, divide by cos in the numerator. Here also, for this term only, divide by cos and multiply by cos. This is a rearrangement. This will become tan theta. I take out tan theta. This will become tan theta. And then I take tan theta out. They'll cancel out. And you get your answer. मैंने cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, tan थीटा बन जाएगा. tan थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, बाहर. यहाँ भी cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, tan थीटा बन जाएगा. tan को बाहर निकाल दो, tan कट जाएगा ऊपर नीचे से. इसका क्या है ना, dy by dx is dy by d theta by dx by d theta, पैरामेट्रिक फॉर्म. ये cos थीटा फर्स्ट टर्म के साथ भी तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो किसके साथ? किसके जो साथ? हाँ ये. अरे दिस इज वन टर्म ना. इफ आई हैव a into b, I can multiply by c and divide by c. but that's a minus b. Where is a minus b? I'm just considering this term. I'm taking only this term. Oh, So this into this will be n sec to the power n theta tan theta. This into this would be n cos to the power n theta. Sin by cos will be tan. This is sec theta tan theta plus this is, this minus minus become plus. This is tan theta cos theta. N rahega, n is there. Now you take tan common from numerator and cancel. Square this, you get this. Life is so easy. सर Yes. सर मुझे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स से शुरू करना है और कब हमें आर एच एस को पहले सिंप्लीफाई करना है और एल एच एस को पहले करना है. हाँ, तो ये because क्या? dy by dx का जो आंसर है that would be in terms of theta. See, if you don't want to simplify RHS, even then you could have got your answer. See, once I get dy by dx as this, then I need to rearrange then this, and I write this in terms of y. You can do that also. After getting this, square this, and then try to write these terms in terms of x square and y square. वैसे कर लो. बस सेक्स स्क्वायर कैसे आया एक बार फिर से बता दो. कहाँ पे? लास्ट स्टेप में. सेक्स स्क्वायर कहाँ पर है? सेक टू द पावर n है ना वो तो. अच्छा एन है, सॉरी मुझे. This is
This is sec to the power n minus 1 theta into sec to the theta. So this will become ठीक sec है n theta. All right, ending the class. In the next class, we'll be doing MCQ on differentiation. सर Okay. सर